जितेंद्र जी, आपको क्राइम फ्री भारत मिशन को समझने का मौका मिला क्या? हाँ, मैं अभी बीच बीच में थोड़ा सा क्लिप चेक कर रहा हूँ। ओके। उसका कारण ये है क्योंकि मैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस और के साथ में इन्वॉल्व काम कर रहा हूँ। ओके। तो इंटरनेशनली और नेशनली अभी जो खास करके महामारी का जो केस चल रहा हम्म। है, इसके पीछे एक बड़ा फ्रॉड गेम चल रहा है और उस Oh, फ्रॉड गेम को I am in 200% agreement. I don't know whether you are aware of it or not. In हाँ, 2020, when this Corona affair came, हाँ, so I wrote almost 5 letters to Prime Minister, yes, and it was in different tone and tenor. And finally, I conducted research myself, and हम्म, to your surprise, we could हम्म, prove that coronavirus is being its outer membrane is being destroyed by lemon juice, and it is yes, being killed, right? yes, Then I have written again letter to Honorable Prime Minister how within 4 to 6 days हम्म, Corona can be off the India, and you do not need not to go for the lockup or any kind of thing. So हम्म, locking up is not a good thing, and people are suffering a lot. And हम्म, when nothing happened, then I spoke to Dr. Pandya. okay, Dr. Pandya is a nodal officer, I mean, chief of Corona affairs, right? हम्म, So I said कि I discussed about the letter which I had written to Honorable Prime Minister, and I made a very simple request that since you have already uh, connected all RT-PCR labs through the software, so I हम्म, requested him that at that moment of the time, I remember there were almost 4 lakhs positive cases per day, the new cases. हम्म, हम्म, So I said, this is a very simple thing. You हम्म, just request or instruct your laboratories that they just put one drop of the lemon juice in the positive samples, and you हम्म, resubject the test, and you will find that solution is vitiated because corona is killed, right? And हम्म, this uh, can be done in a day because you are having enough samples across the country, and that is almost 4 lakh samples. okay, So instead of saying yes, he will do or not do, he came out with a very original thing, and he said, "Sir, do you know that health is a state subject?" हम्म, When he said health is a state subject, मेरा एकदम भेजा खराब हो गया, right? हम्म, I हम्म, said, डॉक्टर पांडे, आपको लज्जा बिल्कुल नहीं आती है क्या? यदि हम्म, ये हेल्थ सब्जेक्ट है तो किस अथॉरिटी से आप हर दिन नए नए प्रोटोकॉल जारी कर रहे हो जो फतवा जैसे हैं, और बिल्कुल। किसी भी राज्य सरकार और एसीएस हेल्थ की औकात नहीं है कि आपके इन फतवों के अगेंस्ट कुछ भी कर दें, वो औकात एक नहीं सिंपल है। स्टेटमेंट भी नहीं दे सकते। हाँ, हाँ, मतलब वही मैंने कहा कि इतनी औकात नहीं है। तो आपको नहीं लगता है कि जो है स्मॉल थिंग्स, एंड आई एम नॉट सेइंग दैट यू एग्री विथ मी, आई एम सेइंग you confirm I am giving you a very simple solution which can be done in a day, and next day you हम्म, can publish a global paper, and India will become hero, and whole world will come out of this crisis. हम्म, uh, as you know, there were that big conspiracy in which Dr. Pandya is also a helpless creature. yes. In that case, let me just give you a glimpse, Huh. because everything that is undergoing under the name of coronavirus Mhm. or the COVID-19, Mhm. it is clear that throughout the world, Mhm. international organizations and human rights organizations or doctors, nurses, they have all cleared up the things that the coronavirus, the virus itself has not been isolated ever till Uh-huh. date from Mhm. any of the person or laboratory or organization, even CDC. Mhm. And it was totally a But program of no, gain of functioning. but they are saying that they have isolated and they are doing this and that's how they are identifying ki this is of the different
distortion. I don't know what is they are classifying these coronas. So what is the basis of classification? No, that's what I'm telling you, that Mhm. since international organizations are openly speaking up, the Mhm. laboratories are openly speaking up, the human rights organizations are literally coming up with the things. Mhm. And it has been proved even that this virus has not been isolated. So when it is not isolated, then how they came to know that it is migrating or it is converting from man to man or human to human, right? Mhm. Moreover, the thing is that the same thing that has been already on the platform Mhm. with many of the other organizations and throughout the world, Mhm. that this coronavirus, which is not a pandemic, it's a plandemic, Mhm. because Mhm. all the scientists and whatever they have been bringing out Pandemic the means it things. has been planned and it has been forced on the globe. You mean to say that Yeah, pandemic means that only? yes, Okay, right. yes, that's what Okay. I'm saying. That gain of functioning means Dr. Fauci I really liked your and this word Dr. pandemic. Yeah. Yeah, Daszak and all that, they persons, they were involved in the one kind of gain of functioning. So Mhm. gain of functioning mean the US was funding and other countries were funding into this. Then China's laboratory was used, and it has been a bio weapon war like situation. The VP, this CDC of India, the Mhm. chief defense officer, right? He was killed. He was murdered actually. He was Mhm. not just an accident. It was not an accident only. It was, Mhm. it was just a blunder murder, right? Mhm. Mhm. And in that sense, I have given two letters from my side also to Government of India. Mhm. One for the children vaccination, because when Sanjay Rai said that the vaccination is not required for children because children are already healthy. Mhm. And in that case, the chief secretary is Mhm. transferring my letter from time to time to the secretary health, but he is Mhm. not replying me. Right? Mhm. I Mhm. told them that the things which are there throughout the international media and all these things, UN is a private organization. So UN being a private organization of the countries, Mhm. the country has signed something with that. Mhm. Right? In Mhm. 2015, there were number of countries who signed a treaty of New World Order. Mhm. So in that sense, if I talk about the New World Order is a private agenda. It's not a government agenda, I read right? about it. So I'm not very sure that to what extent it is real to close to the reality, but uh, I feel there's some element of truth in that. the, the only thing which I want to tell you, Mm-hmm. New World Order is an agenda which was prepared by a number of countries in 2015. It Mm-hmm. was signed under UN organization, right? And then they tried to find out some clue on some cause where they can force the world to go into the New World Order. And they were looking forward to And plan something like this. actually, let me know from you. Somewhere I was reading that the vaccine it was patented long before. That's what I'm telling you, that RT-PCR test kit, which they spread throughout the world through the World Bank, that Mm-hmm. was spread by 2017. So when That 2017 you talk about, really to some extent verify that or endorse or substantiate your claim that it is a pandemic. that's what I'm saying, no, because Mm-hmm. only thing is that Mm-hmm. आप सीधा सा एक चीज आप लगाइए, अगर मैं हिंदी में थोड़ा सा बात करूंगा, हाँ हाँ 2017 के अंदर आपका सारा टेस्ट किट पूरा वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड बैंक के थ्रू पास किया गया। एक हम्म बीमारी जो महामारी है, डॉक्टर फाउची कहते हैं कि 19 में ट्रम्प का लास्ट जब चल रहा था हम्म तो इन्होंने कहा कि एक पैंडेमिक आने वाला है और ट्रम्प के लास्ट एंड में यानी उसके रूलिंग लास्ट में ये आएगा। हम्म तो जब आएगा तो आप मुझे बताइए डॉक्टर फाउची कौन से प्रॉफिट है जो उसको मालूम पता चल गया कि भाई इतना बड़ा महामारी आने वाला है। 2017 में आप टेस्ट किट पूरी दुनिया को बांट रहे हो, किस आधार पे बांट रहे हो? आपको क्या पता था कि इस तरह का वायरस आएगा और इसके लिए आपको ये टेस्ट किट चाहिए?
ठीक है। डॉक्टर जो एक्चुअली इसका इन्वेंटर है आरटीपीसीआर का, वो खुद बोलता है कि ये एक नॉर्मल टेस्ट किट है, इसमें आप जितने पॉजिटिव जाना चाहते हो वो उतना पॉजिटिव आपको मिल जाएंगे, जितना नेगेटिव चाहते हो उतने नेगेटिव मिल जाएंगे। मतलब you have to feed it in advance, something like that, and हाँ, वो एडवांस में उसको फीड करो या उसकी स्पीडिंग कुछ ऐसा है। ठीक है, सीडीसी उसको कैंसिल कर चुका है। दूसरा, सीडीसी खुद मान चुका है कि ये नॉर्मल इन्फ्लुएंजा टाइप का है। तो नॉर्मल इन्फ्लुएंजा है जो कि नॉर्मली हमारे सर्दी के मौसम में इंडिया में खास करके या सर्दी के कंट्री में जहाँ भी होता है वो डेली आता ही आता है। तो इस आधार पे अगर हम देखें तो ये एक प्रकार से पूरा पैंडेमिक है, और इसमें एक्चुअली जो इंजेक्शन जो आपको वैक्सीन बोल रहे हैं ये एक्चुअली वैक्सीन नहीं है। ठीक है, अभी जॉनस कैनेडी का जो जूनियर है, what exactly it is in your views? It is some kind of the nanomaterial which is intended to modify your genes. That's what I'm telling you कि ये एक्चुअली रॉबर्ट मेलोन को आप पढ़िए। रॉबर्ट मेलोन एक्चुअली mRNA वैक्सीन का इन्वेंटर है। ओके। वो खुद बोल चुका है कि एक्चुअली ये एक जीन थेरेपी है, और जीन थेरेपी में ये आपके डीएनए को मॉडिफाई करेगा, डिकोडिंग करेगा और मॉडिफाई करेगा, डिकोडिंग भी करेगा और मॉडिफाई भी करेगा और म्यूटेशन भी करेगा। ठीक है, और म्यूटेशन भी कर सकता है। अब उसमें क्या रिजल्ट है, क्योंकि उसका जो कहना है कि बच्चों में तो ये बिल्कुल दिया नहीं जाना चाहिए, ये ट्रिगर ऑन होने के बाद ऑफ नहीं होगा। अब हमने इस चीज नहीं, लेकिन ये बताइए ना, आपने दुनिया को फोर्स कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने खुद जो वो कहा, और आई फाउंड दैट कि लेमन इज वर्किंग, एंड जिनको भी हमने लेमन थेरेपी दी है उस पूरी चीज को डॉक्यूमेंटेशन किया गया, and that documentation also had been shared. So I am of the firm view that it can be easily handled with the lemon, few 2 drops of the lemon in both nostril. Then why vaccination? Number one. Number two, it is costing 1,200 rupees per vaccine, and if you multiply it by 137, it makes it a 17 lakh crore. And if you need 2 vaccine at least with the booster dose, so it means it is 34 lakh crore rupees, and your income tax base is only 10 lakh crore at the moment. So you need 4 years of the income tax just for the vaccination. Number one. Number two, why when some people are opposing that they will not undergo the vaccination, then why it is imposed differently. Say you cannot go in market, you cannot go in a super bazaar, you cannot enter into the train, you cannot enter into aeroplane without having the vaccination. Though I myself had to undergo the vaccination because I had to visit my daughter, so I will be requiring that entry to the airport, and that will not be possible without vaccination. ठीक है, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो ये चीज को टोटल मिला के कि पहली बात, मैं अगर स्टार्टिंग से इसको थोड़ा सा बता दूं कि जब गेन ऑफ फंक्शनिंग कर रहे हैं तो गेन ऑफ फंक्शनिंग का मतलब होता है कि आप एक बायो वेपन तैयार कर रहे हैं एक प्रकार से। ठीक है, और ये वेपन हैजार्डस क्रिएट, वायरस को आप जब मॉडिफाई करते हैं तो हैजार्डस बना रहे हो जो ह्यूमन बीइंग के लिए खतरनाक है। अब इस मामले में आपकी जो गेन ऑफ फंक्शनिंग चली थी, जिसमें ट्रम्प ने बोल भी दिया था कि चाइना से वायरस आया है, इस तरह का चाइना वायरस है जो भी है, तो इसमें एक जो इन्वेस्टिगेशन होना था इंटरनेशनली वो कहाँ गया, इंडिया में कहाँ गया या बाकी कंट्री में कहाँ गया। दूसरी चीज ये है कि जब आपको मालूम था कि इस तरह की हरकत होने वाली है या इस तरह की चीजें आने वाली हैं, तो इग्नोर, गवर्नमेंट अगर कहती है कि हमें मालूम नहीं है, मैं नहीं मानता कि गवर्नमेंट को मालूम नहीं है। कारण क्या है, 2015 के अंदर जो एग्रीमेंट यूएन के अंदर साइन हुआ है उसमें तो इंडिया भी साइन किया हुआ है ना, और WHO की सारी बॉडीज में इंडिया का मेंबर बैठे हुए हैं। तो आपके जो मेंबर बैठे हुए हैं, आपकी हर इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही जा रही है, सब कुछ आपको मालूम है। तो आपने अपनी कंट्री को, अफ्रीकन कंट्री में जितेंद्र, एक थोड़ा सा आपको हल्का सा जो है डिफरेंट डायरेक्शन में ले जाते हुए, आई वुड लाइक टू नो योर रिएक्शन। मेरी एक फीलिंग है कि भारत के जितने भी विद्वान, साइंटिस्ट और जो पर्सन दोज हु रियली मैटर्स, they are on the radar of international